कौन सा टॉपिक है यार जो अपने करना है वो तो हो ही ना इंटरप्ट सीरियल है उसके बाद। है ना नेक्स्ट Okay, let's start today's lecture. Uh, Next lab will be on serial communication. We after this week's lab, next week जो lab होगी that will be on uh, serial communication. Uh, so this is another uh, block part of big part of any microcontroller, the ability to communicate uh, through different protocols, serial communication. Serial communication basically uh, in the beginning we had uh, parallel communication, and that parallel communication between computers, the between processors was only possible within a lab. So that would mean in parallel communication you have two computers. Here you have another computer, and they would communicate through uh, ports. So this communication was parallel communication, parallel. In parallel communication, uh, this will be an 8-bit port like this. This will be also an 8-bit port. For this will be a transmit output port, and for this it will be receive input port, and this will be transmit output port. This will be receive input port. So in this way, bite-sized data could be sent in one transaction. So you could transmit one byte of data in one transaction. But there was a problem with this parallel port. It is slowly, basically, parallel port concept got vanished. It became obsolete. So basically, there are very few parallel port uh, that are there, standards. Mostly standard like USB and many other standards are all
serial standard. So in a serial standard, what you have is here uh, that you have a computer one over here. Here you have computer two. Here you have computer two, and here you have a parallel port that writes 8 bit of data here. But this 8 bit register is actually a shift register, which is called PISO, parallel in serial out, parallel in serial out. So the serial output of this is a single wire. As I said here, there are very few standards. Sorry, I forgot to complete that topic. Few standards because this needs 8 wires plus 8 wires, 16 wires to go from one uh, computer to another. And over a very long distance, that would be infeasible. That will not be possible. Um, Not only cost wise, the cost will be very high. So you want to maximum distance, you could transmit it to 15 feet or something like that. So this is not a cost effective solution. You need 8 wires. And in PISO, in this case, this is parallel in serial out computer uh, shift register. And this the output of this serial out is basically uh, serial in of another register that is on the receive side. So this is called T transmit buffer. This is called receive buffer. So 8 clocks of data is sent over here. So after 8 clock cycles, this data transfer. So this is serial in, and this is serial in parallel out register. SIPO. So parallel out. So when the data is transmitted in this direction, the after 8 clock cycles, since they are both clocked registers, in 8 clock cycle, this data is copied over here. इसका जितना भी डाटा होता है वो इधर आ जाता है. Now we only need, so this part, this wire is just a single wire. Single wire. So same mechanism is needed for sending data from here to here. So you need another
set of, in that case, you will have PISO on this side and SIPO on the other side, and that will complete a full duplex transmission. Full duplex means half duplex is the case when only on one wire is shared. Sometimes the data is sent in this direction, sometimes it's sent in this direction. The full three wire would have uh, this wire for sending data from here to here, and another wire for sending data from here to here. This time this will be piso and this will be sipo. So output or 8 bit of this data is consumed by this computer. So for this is transmit and this is receive. So you have TX buffer, you have RX buffer, you have RX buffer, you have TX buffer. तो दिस इज अ थ्री वायर सिस्टम. तीसरी वायर क्यों चाहिए? एक पे डाटा जा रहा है, एक पे आ रहा है, तीसरी कौन सी होगी? अब्दुल्ला अफजाल, एक पे डाटा आ रहा है, एक पे जा रहा है, तीसरी कौन सी होगी? असना, तीसरी तार कौन सी होगी? हाँ भाई जमशेद, एक तार जा रही है, सारे लोग सो गए हुए हैं. हाँ भाई जागे. सर एक पे डाटा जा रहा है, एक पे आ रहा है, तीसरी कौन सी होगी? सर मैं क्लॉक की होगी. इंटरप्ट की, क्लॉक. क्लॉक की होगी. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड. तीसरी होगी क्लॉक की. सर दूसरा ये स्लो नहीं है पैरेलल कम्युनिकेशन से? सो पहली बात तो ये अभी बताता हूँ इसका आंसर. पहली बात तो ये क्लॉक की होगी, लेकिन ये तीसरी ये नहीं होगी, एक और होगी. क्लॉक भी होनी चाहिए लेकिन एक और भी होगी. वो कौन सी है? ग्राउंड मेरे बच्चों, ग्राउंड. ग्राउंड भी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए. इस ग्राउंड के बगैर कैसे कम्युनिकेशन होगी? तो दिस मेक्स दिस थ्री वायर सिस्टम TX RX ग्राउंड. ग्राउंड, ग्राउंड नजर नहीं आ रही होगी नीचे, क्योंकि वो ग्राउंड के थोड़ा सा नीचे चली गई है, मिट्टी में दब गई है, इसलिए नजर नहीं आ रही ग्राउंड. थोड़ी देर के लिए यार दिखा दें ग्राउंड मुशतबा, फिर ऊपर कर लेंगे. तो दिस इज ग्राउंड. तो उदाहरण है कि ये इसका इसका जो स्पीड है एक बाइट ट्रांसफर करने की, इसकी एटलीस्ट उससे 8 टाइम ज्यादा कम होगी स्पीड पर बाइट. मतलब एक बाइट अगर 1 सेकंड के बाद जाती है तो यहां पर आपको 8 टाइम ज्यादा स्पीड चाहिए. अगर आपने यही मुकाबला करना है तो एक बाइट का मतलब है कि यहाँ पे आपको 8 बिट्स पर सेकंड स्पीड चाहिए.
if you want to compete with that. So this is a much higher speed. But technology, as the technology has it, serial communication can be done at very, very high speed compared to parallel. So it basically the benefits of communicating on a serial line over very high. So this wire can be very long. These three wires can be much, much longer than these. And the cost is very only 3 तारें बिछानी है आप उसमें आपको 16 प्लस ग्राउंड भी था नीड ग्राउंड आल्सो सो लाइक अ पैरेलल पोर्ट कंप्यूटर में होती थी पहले पैरेलल कंप्यूटर्स होते थे पैरेलल पोर्ट से चलते थे तो दैट वाज 25 पिन कनेक्टर 25 pin connector and you needed a 25 pin ribbon cable to connect devices printer and the computer together. But now you have this thing, serial communication. Everything is almost connected through serial uh, communication. So this advantage that you just need single wire, and these wires can be organized in a way that there is minimum uh, inter electromagnetic interference. Here, all the wires going in parallel, and the parallel capacitances between the wire and inductances would upset, limit the distance that you could cover. Here, uh, only two wires, so you can twist them, twisted pair. You can make a twisted pair, and you can send the distance on very long. So all the modern uh, communication the LAN हो जाए ये जो भी हो they are based on serial communication. Some serial communication requires that both are on the same clock. Same clock. So in that, if they need a clock on both sides, then that is called a synchronous serial communication. But if they don't need a clock, there are protocols which can transmit serial data without a clock. They will be called, उनको क्या कहेंगे? Ahmad Imran? Uh, those communication protocols that don't need a clock, they will be called Asynchronous. asynchronous. Very good. So asynchronous. Asynchronous protocols. So if you have a clock, they are synchronous. If you don't have a clock, they are asynchronous. So we'll touch upon. Process. So the difference between these two is Jamshed has asked me what is the difference. Difference is very clear. There is no need of any SIPO and PISO for this communication. You can directly send 8 bytes of data here to here, here to here. 8 bit chunks of data from one side to another. So you don't need any intermediate hardware. So here you need this hardware. And processor, basically, processor really cannot do this job. कि पहले इसमें डाले and then send करे one by one, one by one, one by one. तो उसके लिए फिर उन्होंने एक बंदा रखा होता है कि उसको एक बाइट पकड़ा देते हैं कि ये लो ये बाइट सेंड करो
और उसको बता देते हैं कि कितने बिट रेट पे सेंड करनी है, तो ये खुद ही उसको सेंड कर देता है। वो बंदा है एक यहाँ पे उन्होंने, जिस तरह एक एडीसी का एक बंदा रखा हुआ है जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। जस्ट लाइक वी हैव अ पीडब्ल्यूएम हार्डवेयर, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। वी हैव टाइमर्स, बंदे रखे हुए हैं टाइम काउंट करने के लिए, दैट आर पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। सिमिलरली वी हैव डेडिकेटेड सेपरेट hardware module inside the processor, a microcontroller, that is responsible for this communication. All processor has to do is to give it 2 3 4 bytes of data, and it will transmit those, and when the transmission is complete it will send an interrupt कि और मुझे दे दो डाटा। जस्ट लाइक यू नो, जैसे वो चारे खाने वाली मशीन होती है ना, चारा काटने वाली मशीन, आप उसमें चारा एक डाल देते हैं, हाथ बचाना चाहिए उसमें, तो आप चारा डाल देते हैं, वो काटती रहती है, जो ही वो खत्म होने लगता है आप और चारा डाल देते हैं, एंड बिफोर इट फिनिशेस यू पुट मोर चारा इनटू दैट। क्लोवर कह लें, या जो भी, चारे को क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? क्लोवर कहते हैं। व्हाट इज चारा कॉल्ड इन इंग्लिश? ये कह लें, क्लोवर कह लें, जो भी कह लें, एनीवे। तो इस तरह से वो उसमें इंटरप्ट तो आते नहीं है, तो यू हैव टू सी कि कब खत्म हो जाएगा। इसमें ये कि आप इसको चारा डाल देते हैं, एक हार्डवेयर होती है यहाँ पे, ये वाली हार्डवेयर है पूरी, इसको आप वो एक डाटा दे देते हैं कि ये वाला डाटा ट्रांसमिट करो, तो दिस इज कॉल्ड यूआर्ट। यूआर्ट यूआर्ट is a very popular basic module. In the beginning it used to be a separate IC, it was not part of the microcontroller, and we had to uh, kind of learn to use it. It was also a 40 pin IC that will interconnect with the microcontroller. Microcontroller was also 40 pin IC, and UART was also 40 pin IC, and UART stands for universal. किसी का माइक ऑन है? अहमद इमरान, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर ले। ऑलराइट, सो यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर, रिसीवर को RX लिखते हैं और ट्रांसमीटर को TX। यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। इसका ये भी एक बना बनाया मॉड्यूल आता है, 168850, एक IC होता था एक जमाने में। सर्च करना यही है ना यार, 168850 UART। सर सर यस, सर ये यूआर्ट में ये पीसो और सीपो इस यूआर्ट के आईसी के अंदर है, ये हाँ आपने सारे उसके बताया? अंदर, यही इसके अंदर होते हैं। मतलब प्रोसेसर जो है वो 2 आईसीज लगी होती हैं बस सीरियल कम्युनिकेशन में। 2 ICs लगी होती हैं, प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही होती हैं, जी लैदा नहीं ठीक लगी होती, पार्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। So ठीक है। you can see here, you can, if you want to make a big diagram of the microcontroller, this is the microcontroller, this is the CPU of the microcontroller. नजर आ रहा है? ठीक नजर आ रहा है? जी सर थोड़ा सा ऊपर कर दें। नीचे कर दो। नहीं जी ठीक है। So this is the CPU and this is the UART. So processor communicates on 8 bit 8 through 8 bit bus to this UART.
It has a input port, output port, and so on. The UART is responsible to then send data bit by bit on the TX channel and receive data on the RX channel. Processor just sends, thinks that it has written data to a port. उसके लिए तो 8 बिट पोर्ट है, एवरीथिंग टू द प्रोसेसर इज जस्ट एन 8 बिट पोर्ट. तो प्रोसेसर, मैंने कहा है ना कि प्रोसेसर, सारी दुनिया के प्रोसेसर बेचारे अपनी तरफ से यही समझते हैं कि हमने जो है वो डाटा मेमोरी से रीड किया या मेमोरी से राइट किया. और सम टाइम जो मेमोरी की जगह मेमोरी नहीं होती है, वो रजिस्टर होता है, तो वो दैट बिकम्स एन आउटपुट पोर्ट. एंड सम टाइम जिस मेमोरी की जगह बफर होता है, दैट बिकम्स इनपुट पोर्ट. सो तो प्रोसेसर को नहीं समझ आया, पता लगता वो मेमोरी में ही राइट रीड करता. इस तरह ये भी प्रोसेसर को एक रीड राइटेबल पोर्ट ही नजर आती है. वो डाटा जब ट्रांसमिट करना है, वो एक डाटा इसमें राइट कर देता है. दिस इज कॉल्ड एस बफ, सीरियल बफर. सीरियल बफर में जब आप कुछ राइट करते हैं तो यूआर्ट को डाटा मिल जाता है, एंड इट इज ट्रांसमिटेड ऑन दिस टीएक्स चैनल, एंड इट इज ट्रांसमिटेड बिट बाय बिट. ये दूसरी साइड पे चला जाता है. इट कैन गो टू वेरी फार अवे. On the receiving side, the data is received in this same manner, bit by bit. And when 8 bits are complete, a byte of data, 8 bits complete, a byte of data is then CPU is told कि एक byte का data receive हो गया through an interrupt. Serial port की अपनी एक interrupt होती है. तो it knows, the CPU knows कि भाई एक byte का data आया, वो उसको ले उठा लेगा. तो ये काम सारा प्रोसेसर को यही नजर आता है कि एक पोर्ट है, कपल ऑफ पोर्ट्स हैं जिन पे मैं कुछ राइट करता हूँ या कुछ रीड कर सकता हूँ. जो आपकी जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके ऊपर ये दो पिन होती हैं, टीएक्स की और आरएक्स की. एक है पिन बिट पोर्ट सी, दैट बिट्स कौन सी है भाई? टीएक्स की बिट 7 है. Bit 6 or 8. एक मिनट देख. TX bit 6 है और RX bit 7. तो इफ यू डू एस बफ पे कुछ राइट करें, यहाँ पे सिलोस्कोप लगाएं, तो आपको वो डाटा बिट बाय बिट आपको इस पिन पे अपीयर होता हुआ नजर आएगा. तो ये एक पूरा मॉड्यूल है, जस्ट लाइक एडीसी या टाइमर. यू हैव टू फर्स्ट सेट दिस मॉड्यूल. जिस तरह टाइमर में आपको सेट करना पड़ता है कि 8 बिट को होगा, 16 बिट का होगा, या जिस तरह आपको एडीसी को इनिशियलाइज करना पड़ता है, एडी इनिट, और पीडब्ल्यूएम को इनिशियलाइज करना पड़ता है, इसी तरह यूआर्ट को भी आप इसी तरह इनिशियलाइज करते हैं फर्स्ट. एंड एट दैट टाइम यू टेल द यूआर्ट कि किस डाटा रेट पे डाटा ट्रांसमिट करना है, बिट रेट क्या होगा. So bit rates, popular bit rates are started. Actually, it started in history. It started maybe perhaps 300 bits per second. Then it got doubled to 600 bits per second. So as the technology advanced, it goes to 600 bits per second. Then it reached 1200 bits per second. Here it reached 2400 bits per second. Here it reached 4800 bits per second. Here it reached 9600 bits per second. That is very common nowadays. Usually, if the first time a device is connected, it is connected at 9600. तो ये बड़ा सा मैं लिख देता हूँ 9600. So this is often the default case. So you can double this now. You can go up to 19200.
and so on. So तो 9600 इसकी स्पीड कैसे पे क्या सर इसकी स्पीड कैसे कॉन्फ़िगर होती है? स्पीड कैसे कॉन्फ़िगर होती है? अच्छा, ये भी एक जरा आगे का टॉपिक है कि कैसे ये स्पीड कैसे डिसाइड होती है, कि किस तरह से स्पीड किस स्पीड पे बात करनी है। बेसिकली होता यही है कि प्रोसेसर एक कम स्पीड से कम्युनिकेशन करना शुरू करता है। डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, जितनी लंबी तार होगी, जाहिर है कि ये 5 वोल्ट का आपने सिग्नल यहाँ से 1 भेजा है, तो वायर अगर लंबी होगी तो उसमें रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो रिसीवर के ऊपर आपको 5 वोल्ट की बजाय, अगर रिसीवर की जो मिनिमम 1 का एक्सेप्टेंस लेवल है, लॉजिक 1 का, अगर उससे कम वोल्टेज मिलेगी रिसीवर को, तो उसको कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा कि ये 0 मिला या 1 मिला। फर्ज करें ये हो जाती है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट का पता नहीं है कि ये 1 है या 0 है। ये 0 में नॉइज आया हुआ है या 1 में नॉइज आके ये 2 वोल्ट होगी। तो इन दैट केस प्रोसेस वो एक उसको कंफर्म नहीं होता, वो एक वो हो सकता है इसको 1 आपने भेजा, 0 रिसीव करे। और उसमें एक मैकेनिज्म होता है, ऑटोमेटिक का एरर चेकिंग मैकेनिज्म होता है, उससे उसको एरर मिल जाती है, तो वो कहते हैं जी ये पैकेट जो है ना ये सही रिसीव नहीं हुआ, पैकेट में एरर आ गई है, तो पैकेट ड्रॉप हो जाता है। तो अगर वो स्पीड, अगर पैकेट ड्रॉप हो जाए तो वो फिर कम स्पीड पे चला जाता है, कनेक्शन लोअर स्पीड पे आ जाता है। अगर पैकेट फिर भी ड्रॉप हो रहे हैं तो उससे लोअर स्पीड पे आ जाता है। अगर आप किसी मोबाइल स्टेशन के पास हो जाएंगे तो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा, आपका पैकेट ड्रॉप हायर स्पीड पे चलते जाएंगे, इट विल स्टॉप व्हेन द पैकेट स्टार्ट्स टू ड्रॉप, और यू गेट द मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट। Maximum transmission rate could be 55 megabytes per second, or so on. So it will stop where it gets, as you go dynamically ये speed switch होती रहती है. So there is a separate mechanism in the communication device to control the bit rate, so that you don't get transmission errors. So, but you have to start at some point. Most devices, when they start at very low bit rate. अगर उस पे भी कनेक्ट ना हो तो इसका मतलब है कि डिवाइस जो है ना वो एक्सेसिबल नहीं है। तो एट वेरी लो बिट रेट अगर आप वो पैकेट टेस्ट पैकेट भेजती हैं, एंड इफ द रिसीवर पे वो टेस्ट पैकेट विदाउट एरर रिसीव हो जाता है, तो वो एक हायर पे ट्राई करती हैं। अगर उस पे एरर आ जाए तो वो वहीं स्टिक कर जाए। तो बेसिकली इज ट्रायल एंड एरर, बढ़ते जाओ स्पीड को, जहाँ पे एरर आती है उसे एक लीजिए, जहाँ पे एरर आती है उससे एक नीचे। जिस तरह वो ऑफिस हायरार्की का एक रूल होता है ना, देयर इज अ रूल ऑन ऑफिशियल हायरार्की दैट एवरीबॉडी गेट्स प्रमोशन rises up to a level where he is incompetent. समझ आ रही है इसी बात की? Because if he was competent at that level, he will get promoted to the higher level. So the finest level that he reaches is where he barely can make his job. So same case here. Communication speed बढ़ाते जाते हैं. So when the packet drop increases significantly, तो speed कम कर देते हैं. So that it can merely make, uh, there is a good, uh, what you can say, a good, क्या लफ्ज यूज होगा, मेरे दिन में आ रहा है, मेरे बुढ़ापे में लफ्ज ये भूल जाते हैं मुझे। तो देर इज अ गुड, क्या बहरहाल ये कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम स्पीड मिल जाती है और मिनिमम एरर रेट मिल जाता है, तो वहां पे आप उसको लॉक कर लीजिए।
Right. So this is a basic background of this serial communication. So you have a parallel in serial out register, your serial in parallel out. तो यूं समझ लें, जैसे एग्जांपल यूं समझ लें कि यहाँ से आपने एक डबल रोटी भेजनी है। डबल रोटी जिस पाइप में से भेजनी है उसमें सारी डबल रोटी फिक्स ही नहीं हो सकती, ये आपकी डबल रोटी है। तो जिस पाइप से आपने ट्रांसमिट करनी है डबल रोटी, उसमें सिर्फ एक टोस्ट ही जा सकता है। तो आप इसके टोस्ट करके भेज देते हैं और दूसरी साइड पे फिर दोबारा वो डबल रोटी इकट्ठी करके तो यूज हो जाती है, पैक हो जाती है। So on the other side you have another device that वो डबल रोटी को पैक कर लेते हैं। तो इस तरह से टोस्ट बाय टोस्ट आप भेजते हैं और दूसरी साइड पे यू गेट द डबल रोटी बैक। अब ये है कि डबल रोटी एक्चुअल फिजिकल डबल रोटी में तो आपको पता लग जाता है ना कि ये इसका ऊपर वाला टोस्ट है, ये इसका नीचे वाला टोस्ट है। तो जब ऊपर वाला टोस्ट जाता है उसके बाद जब नीचे वाला टोस्ट जाता है तो आपको पता लग जाता है कि अ, पूरी डबल रोटी चली गई। रिसीविंग एंड पे भी वो टोस्ट फर्क होते हैं ना, जो आप खाते नहीं हैं, अपनी अम्मी को कहते हैं ये मैंने नहीं खाना, मुझे इस पे क्यों जैम लगा के दिया आपने। है जमशेदी, क्या क्वेश्चन? इज देयर एनीथिंग टू फाइंड आउट एरर रेट? वेल, एम्पिरिकली पता लगेगा कि क्या एरर रेट है, बट क्योंकि जितनी आपने बिट्स भेजी हैं ये पता लग जाता है कि उनमें कितनी बिट्स में एरर आई है। ये वो उसका रिसीवर को पता नहीं लगता कि ये 1 है या 0। If that is the case, when it doesn't know whether it's a 1 or 0, that information cannot be used. So then there are big, huge communication protocols where you can actually send error detecting codes and error correcting codes. कि एक आध बिट की एरर भी आ जाए फिर भी रिसीवर साइड को पता लग जाता है कि ये 0 था या 1 था, by sending some extra information like CRC आप भेज देते हैं, 2D CRC भेज देते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि देयर वाज सम एरर इन द रिसीवर को, और कुछ एरर वो ठीक हो जाते हैं। तो हाउ मेनी एरर्स the receiver can detect and how many errors it can correct, uh, they depend on the technology and the extra information you embed in the communication. So error uh, error distance means how many error it certain uh, communication protocol can detect. Correction distance is how many errors it can detect and then it can correct. Error distance is usually more than the correction distance. Correction अगर 4 बिट्स की वो पता लगता है कि ये 0 नहीं है या 1 नहीं है, वो कुछ पैरेलल में जो सेंड होती है इंफॉर्मेशन, सम एम्बेड करते हैं इंफॉर्मेशन, उससे वो लगा लेता है पता कि ये कौन सी एरर हो, कौन सी बिट खराब हुई। वो तो वो हॉरिजेंटली भी सम भेज देते हैं एरर का, वर्टिकली भी सम भेज देते हैं। अगर वो दोनों सम मैच ना करें तो पता लग जाता है कि यहाँ पे एरर आई। लेकिन डिटेक्शन रेट ज्यादा होता है करेक्शन रेट से। Anyway, so I'm not going into that detail, it's not part of this course. Error correcting codes and error detecting codes are usually studied in some digital communication course. So it's a big course कि कितना बिट रेट क्या होना चाहिए, कैसे बिट रेट ऑप्टिमाइज करते हैं। I am just telling you from the point of view of serial communication. In my pick microcontroller, you have to set the serial communication. When you initialize, you have to set the communication speed. It can be 9600 or 96.96k, 9.6k or 119.2k.
The next one is 384. That usually is too high for the microcontrollers. So most common are 96 and 192. And you cannot, there is no dynamic adjustment. You have to set this, and you have to in advance. You have to know कि receiver side पे क्या expected bit rate है, transmitter का क्या expected bit rate है, दोनों को आपको करना पड़ता है. Some devices are smart devices. They can auto detect bit rate. So we talk about that also. Some modems are some devices can automatically detect the bit rate. And most microcontrollers are basically this UART is asynchronous, and there are some synchronous protocols where you need another clock separately. So you have TX, RX, and clock. So microcontroller also has a SPI interface. इसमें होती है ना क्लॉक, इसमें सेपरेट क्लॉक इंटरफेस होता है एसपीआई सीरियल पैराफरल इंटरफेस. इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे एसपीआई इंटरफेस. तो इसमें क्लॉक का सिग्नल भी जाता है. दैट इज सिंक्रोनस, दिस इज एसिंक्रोनस. So this is the idea of serial communication. And here I was talking about कि how does it know कि कब एक बाइट स्टॉप होगी है, कब एक बाइट एंड होगी है, स्टार्ट होगी एंड होगी. तो इसमें डब्ल्यू टी के केस में तो आपको एंड वाला टोस्ट और स्टार्ट वाले टोस्ट से पता लग जाएगा ना कि एक डब्ल्यू टी खत्म हो गई है. वरना अगर आप एंड वाला और स्टार्ट वाला को ना भेजें, सारे टोस्ट भेजना शुरू कर दें इकट्ठे ही, तो कितने का पता लगेगा कि एक डब्ल्यू टी खत्म हो गई. ऑल द टोस्ट वुड लुक द सेम. अनलेस आपको पता हो कि 8-8 टोस्ट का ग्रुप बनाना है, आप 8-8 का ग्रुप बना लेते हैं. अगर आपको नहीं पता कितने टोस्ट का ग्रुप बनाना है, फिर आपको नहीं पता लगेगा. और अगर तो बिफोर हैंड डिसाइड हुआ हुआ है कि भाई 8 टोस्ट में भेजूंगा, 8 टोस्ट यूज करके एक डब्ल्यूटी को पैक कर लेना. अगर 16 बिट की कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप, तो फिर उसको 8 से 16 पे शिफ्ट होंगे तो उसको नहीं पता लगेगा. क्वेश्चन? हाँ जी. अहमद नहीं, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने माइक ऑन किया हुआ है. ऑलराइट, वेयर इज द पोल? ये पोल क्या है? हाँ, वो उसकी बात अभी ना करें अहमद नहीं. एक क्वेश्चन इसमें ये है कि फिर सीरियल कम्युनिकेशन में एक स्पेशल बिट भेजी जाती है जिसको कहते हैं स्टार्ट बिट. फिर एक भेजते हैं जिसको कहते हैं स्टॉप बिट. एक से ज्यादा भी भेज सकते हैं. तो ये हर एक जो है आपका बाइट या जितना भी एक डाटा का एक पैकेट होता है, इसके स्टार्ट में कुछ स्टार्ट बिट्स भेजते हैं, कुछ स्टॉप बिट भेजते हैं. तो उससे रिसीवर को पता लग जाता है कि एक पैकेट डाटा यहाँ पे खत्म हो गया, ये रिसीव हुआ है, ये खत्म हुआ है. जस्ट लाइक सेंडिंग द डब्ल्यूटी विद द एंड टोस्ट. So stop bit act like that. They act like end toasts in the WOT. So इससे पता लग जाता है कि एक बाइट कब आई है, एक बाइट कब गई. So this is basically the idea of serial communication. मेरे ख्याल आज इतना ही काफी है. तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, सांस चढ़ रही. Okay, मेरा let's call it a day today, and next time I will tell you how serial communication started. SPI is serial peripheral interface.
That's another communication protocol. So next time we'll talk about what are communication protocols. What does this mean to be a communication protocol? Briefly, if I can say this, that give you a good example that if you have a say Sanyo fax machine in your office and you want to send fax to somebody in America, does he need a Sanyo machine? Or you have a Casio fax machine, you want to send data to somebody, फैक्स करना चाहते हैं किसी को अमेरिका में, उसको भी कैसियो की फैक्स मशीन चाहिए या नहीं? अगर नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? किधर गया यार वो? हाँ जी, कोई बताएगा? अगर आपको किसी ने फैक्स करनी है किसी को यूएस में, तो आप यूज कर रहे हैं इधर से कैसियो मशीन टू सेंड फैक्स, या तो शिबा की मशीन सेंड कर रहे हैं फैक्स भेजने के लिए, तो क्या रिसीवर साइड पे भी वही मशीन चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? यार कोई बताए ना, कुछ बोले असना, क्यों नहीं चाहिए? सर पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, कोई और बंदा जो क्लास में प्रेजेंट है कौन है? लेट मी सी। जैनब, आप बताएं क्यों नहीं चाहिए? I'm not sure, sir. हैं? अभी तो नहीं पता। हसन हबीब, आपने फैक्स भेजनी है यहाँ से यूएस से, आप यहाँ से कैसियो मशीन यूज कर रहे हैं, उधर भी क्या कैसियो मशीन चाहिए रिसीव करने के लिए या नहीं? सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया एग्जैक्टली। आपने फैक्स भेजनी है, ये किसमें कौन सा मुश्किल है? फैक्स, यू वांट टू सेंड अ फैक्स, फैक्स का पता है ना? यस सर। So you want to send a fax. ज़ाहिर है fax क्या करती है? It takes an image of your page that you want to fax, and it sends bit by bit data or to the one you are sending to. So receiver side पे क्या आपको fax receive करने के लिए do you need the same kind of machine? सर नॉट नेसेसरली। Not why? सर अगर उसको समझ आ जाता है कि उसने किस तरह उसको बेसिकली ट्रांसक्राइब किया हुआ, तो फिर जरूरत नहीं कि सेम मशीन हो। ट्रांसक्राइब किया हुआ है या उसको डाटा को सेट किया हुआ है, अ, सही है, उसका उसको कहते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है ना? तो क्या ये फिर ये बताएं कि जरूरी है या नहीं कि इधर से कैसी मशीन में आप सेंड करें? डू यू वांट अनदर कैसी मशीन टू रिसीव इट और नॉट? सर जरूरी नहीं है फिर। जरूरी नहीं है। व्हाई? बिकॉज देयर आर फैक्स स्टैंडर्ड्स, those fact standards are standardized by neither the Casio people nor the Toshiba people. They are standardized by some independent third party. Mostly it is IEEE. IEEE sends communication protocols. So if you have a device that works on a particular fax machine protocol to send data, and another device in anywhere in the world that has that particular protocol, it can receive data. USB 3 has particular protocol. USB 2 has particular protocol. Similarly, asynchronous communication has particular protocol. SPI has a particular protocol. So those protocols, if they match, then you can send data and receive data.
If they don't match, you cannot send data and receive data. You cannot send data through asynchronous protocol to an SPI interface. SPI must have an SPI interface on both sides. So that's the difference between the two. So receiving and transmitting devices should have the same protocol to receive. This is the backbone of the communication system, the protocol, communication protocol. अगर ये ना होता तो फिर तो क्या जो है ना तोशिबा वाले सिर्फ तोशिबा की मशीन कोई आपने रिसीवर को भी फोन करके कहते भाई तुम्हारे पास तोशिबा की डिवाइस है मैं डाटा भेज रहा हूँ और हर एक ऑफिस में हर कंपनी की डिवाइसेस पड़ी होती पैरेलल पोर्ट में दिस वाज द केस पैरेलल पोर्ट यूजुअली यू हैड टू हैव there that was customized port you would never know कि किस पिन पे क्या डाटा आ रहा है D0 ट्रांसमिट का D0 का है ट्रांसमिट का D7 का है receive का D0 का है D7 का है and the devices that were used to communicate with each other were within the same lab लैब के लोग डिसाइड कर लेते कि इस तरह से 25 पिन का बनाना है until the parallel port came so parallel port changed a lot of things in the parallel communication of data where it was open कि कौन सी आउटपुट कौन सी पोर्ट पे किन पिनों पे आ रही है इनपुट किस पिनों पे आ रही है सो दैट वे इट वाज अ लिटिल बिट स्टैंडर्डाइज्ड कोई भी बंदा उससे बड़ी फायदा हुआ किसी ने भी इस जमाने में किसी ने भी पीसी के साथ कोई पैरेलल के प्रिंटर बनाना है तो उसको प्रोटोकॉल का पता था कि ये पैरेलल पोर्ट है प्रिंट पीसी की इस स्पीड से डाटा आता है यहाँ इस बिट पे ये है और वो प्रोटोकॉल जब पता लग जाता है तो ओपन हो जाती है हार्डवेयर एनीवन कैन कनेक्ट हिज डिवाइस टू द आप स्कैनर लगा लें आप इमेजिंग कैमरा लगा लें पैरेलल पोर्ट से आप जो है वो प्रिंटर लगा लें कुछ भी लगा लें सो दैट मेड लाइफ मच इजियर एंड दैट एक्चुअली वर वेरी हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ द कंप्यूटर्स अगर कंप्यूटर्स के साथ ये स्टैंडर्डाइजेशन ना होती तो इतना ग्रोथ ना होती so that's the basically scene of the standardization so any more questions okay let's call it a day we'll come back day after tomorrow and we'll talk about the protocols what are the protocols and how they are used in communication